हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। आज हम देखेंगे रेड हेडेड लीक का क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट है, फाइंड एंड राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट पीपल गिवन इन दिस स्टोरी। यहाँ पे लोगों का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, जो कैरेक्टर्स यहाँ पर है उनका। तो फर्स्ट हम लिखेंगे कैरेक्टर्स एंड यहाँ पे हो जाएगा उसका डिस्क्रिप्शंस। सो फर्स्ट है हमारे पास शर्लॉक होम्स। फर्स्ट है हमारे पास शर्लॉक होम्स, फेमस, इंटेलिजेंट, प्राइवेट डिटेक्टिव, keen, observant, with wide knowledge, accurate, deduction. Next, Dr. Watson. Dr. Watson, friend of Holmes, friend of Holmes, narrator of the story, narrator of the story. Next, Mr. Zabez Wilson, Mr. Zabez Wilson, red-headed man, elderly man, fiery red hair, pawn broker. Vincent Spaulding, Mr. Wilson's assistant, Wilson's assistant, smart, efficient, work for half wages, hobbies developing, photograph, insular, small, stout, no facial hair, white, acid mark on forehead. Next, Mr. Duncan Rose, red-headed man, representative of the red-headed man league, selects Wilson for job, selects Wilson's for job. Mr. Ezekiah Hawkins, American millionaire, founder of red-headed league,
स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंट विल्सन स्टोरी एज इट वुड बी शोन इन अ कॉमिक स्ट्रिप। हमें विल्सन की स्टोरी बताना है कि ऐसा लगना चाहिए कि वो एक कॉमिक स्ट्रिप पे शो की गई है। राइट द डायलॉग इन इंग्लिश। इंग्लिश में आपको डायलॉग्स लिखने हैं। जैसे फ्रेम 1 में मिस्टर विल्सन की शॉप है। फ्रेम 2 मिस्टर विल्सन की शॉप। थर्ड, स्प्लॉटिंग टू विल्सन स्प्लॉटिंग सर लुक एट दिस एट इट्स फॉर द रेड हेडेड पीपल। देन आउटसाइड द ऑफिस फ्रेम 3। सो यहाँ पे इस तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पे हम कितनी फ्रेम्स बनाएंगे? यहाँ पे हम 8 फ्रेम्स बनाएंगे। सो सबसे पहले हो जाएगा हमारा फ्रेम 1। फ्रेम 1, फ्रेम 1 में क्या आएगा? फ्रेम 1 इंक्लूड्स स्प्लॉटिंग जॉइंस विल्सन। जॉइंस विल्सन। यहाँ पे कैसे हो जाएगा ये? फिर पिक्चर्स स्प्लॉटिंग टू विल्सन। डायलॉग क्या हो जाएगा? डायलॉग हो जाएगा स्प्लॉटिंग सो will you take me? Will you take me as your assistant? I will work for half wages. फिर विल्सन बोलेगा, विल्सन, all right, you may join. All right, you may join. नेक्स्ट फ्रेम 2 में, फ्रेम 2 में Spalding, okay, my mistake. Spalding show the advertisement. So, Spalding looks a job for red-headed men. You must apply. You must apply. Wilson, £4 a week. Sounds interesting. Sounds interesting. यहाँ पे 2 फ्रेम्स हो गया। यहाँ पर हमारे 2 फ्रेम्स हो गया। अब हम चलेंगे हमारे थर्ड फ्रेम की ओर। हम चलेंगे हमारे थर्ड फ्रेम की ओर, दैट इज हियर। फ्रेम थर्ड, outside the office. Outside the office, Wilson so many redheads. I don't think I'll get the job. Spalding, don't quit. Don't quit. Let's try. Let's try. Then at the interview, frame 4, at the interview, Duncan
Rose, congratulations, congratulations, you are selected. Then Wilson, what what work do I have to do? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट मतलब आगे बढ़ती हूँ. वेट, यही से भी मैं बॉक्स में डाल देती, फिर स्क्रीनशॉट लेना इसका. अब लो, ऐसा, हाँ, अब लो, स्क्रीनशॉट ले लो. फिर फ्रेम, फ्रेम फिफ्थ, वर्क इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन. Duncan Rose, copy the encyclopedia, the encyclopedia, Britannica, Britannica, from letters A, from letter A, do not leave this room from 10 to 2. Frame 6, routine. Narration box. Wilson worked daily for 8 weeks and got paid every Saturday. Again we frame it in the box. Okay. Next, frame 7, league dissolve, league dissolved. Wilson, what, मतलब शॉक में बोलेगी वो. What? The red-headed league is dissolved. The red-headed league is dissolved. इन्होंने क्या किया? नोटिस को रीड किया. नेक्स्ट फ्रेम 8, कंसल्टिंग होम्स. Wilson, I want to know why they fooled me. Fooled me. Please help me, Mr. Holmes. Then Holmes, I will give you my opinion by Monday. स्क्रीनशॉट ले लो इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. दिस इज़ अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. ये एक स्टोरी है, स्टोरी के अंदर आपको डायग्राम बना के बताना है. तो डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले एक बेसिक सा डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले डॉक्टर वाटसन्स स्टोरी.
ये कौन है? ये है मेन नरेटर। फिर इसके अंदर क्या है? फिर इसके अंदर विल्सन की स्टोरी है। तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे वॉटसन की स्टोरी में क्या है? होम्स हियरिंग केस। देन होम्स asked Mr. Wilson to narrate story to Watson. Then Wilson narrating experience with red-headed lake. So यहाँ पर मेन नरेटर है अपने, यहाँ पर मेन नरेटर है अपने वॉटसन, और जो हमारे, और ये जो है हमारे, ये है स्टोरी। सो दिस इज, इसे हम बोलेंगे मेन नरेटिव, और इसे हम बोलेंगे स्टोरी इनसाइड। स्टोरी इनसाइड। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। यहाँ पर हमारा ये लेसन होता है कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जब भी न्यू लेक्चर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।